Hi guys, what's up? I welcome you all to Unacademy. So let's see who's online. And today we're gonna discuss something very amazing, as always. So, hi Harshita, what's up? Hi Gaurav. All right. So let us begin. I welcome you all to Let's Crack Foundation and NTSE. I'm Devyani Gautam, your very own Devyani Gautam, and we are here to discuss some amazing things about chemistry today, as usual, as we always do, right? So chaliye, let the fun begin and let's make learning fun. है ना? That's the motive. So yeah, Foundation and NTSE, this is our series which is going on where we are picking up chapters with a motive that we are not gonna leave any concept untouched. We will crack it, right? So yeah, we are focusing on exams like NTSE, IJS or PRMO along with your foundation, your NSEJS, whatever falls in. हम सब कुछ अच्छे से we'll nichod out every concept and we will focus on things. We will target things very pleasantly, very amazingly, and we will do all that. Yes, hi Shalini. Hi Ananya. Yes, Harshita, I'm live. And hi Sai. Right. So we are focusing on some amazing exams and हमारा motive है to leave no concept untouched and so will we. Here at Unacademy, which has become online, India's largest platform to discuss online things and to be educated very well without a. All right, Harshita, thank God. Yeah. हाँ जी आज हो जाएगा नान्या don't worry. So yes, we are focusing on cracking foundation NTSC and all the Olympiads with India's largest online platform, learning platform. But I'm not just teaching. We guys are learning. We are getting educated, है ना? And ये सब कैसे होगा? How is it possible? Hi Jay Prakash. Hi Gaurav. Yes, I said hi, Gaurav. Now don't spam the comments, please, बच्चे है ना? So yeah, अब Unacademy की जब हम बात करते हैं, it's just by the act of a simple subscription जो हमें लेना है. इस subscription से, इस simple छोटी सी subscription से इतने इतने amazing सारे benefits हैं, which include your daily live classes, they include your live tests and quizzes. अब ये live classes and tests and quizzes जो हैं, they are very important, they're very crucial for you guys, है ना? तो ये किस लिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज व्हेन यू आर लाइव आई एम एन एजुकेटर इज टीचिंग यू एंड यू गाइस आर ग्रास्पिंग ऑन थिंग्स तो आप अपने डाउट्स वहीं के वहीं क्लियर कर सकते हैं ऑल्सो देयर बी लाइव टेस्ट एंड क्विजेस जिससे आप लोग अपनी ग्रोथ को मॉनिटर कर सकते हैं विच इज अमेजिंग द मोस्ट अमेजिंग थिंग इज अबाउट क्विजेस एंड डाउट सेशंस फ्रॉम टाइम टू टाइम इज दिस ओनली है ना एंड देयर आर स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज मतलब आप लोगों ने एक फोकस बना लिया है अब हमारा ओमकांत बच्चे अभी शुरू होने दीजिए प्लीज इट्स द वन शॉट वीडियो ऑफ अ चैप्टर इट विल टेक टाइम या गौरव झा मेंटी होगा आज हम मेंटी के बारे में भी बात करेंगे या सो स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज में यू जस्ट सेट अ गोल एंड इट्स आवर ड्यूटी टू गेट दैट सिलेबस इनलाइन सिलेबस रख के हमें आपका सिलेबस पूरा कराना और आपको अच्छे से पूरा कराना नॉट जस्ट पूरा कराना बट अच्छे से पूरा कराना ताकि आप लोग बिल्कुल ही कॉन्फिडेंटली यू कैन क्रैक थिंग्स all your exams. Yeah. So unlimited access is there like all other subscriptions to all channels of your entertainment. यहाँ पे आपको education में भी you're just a click away. You are just a click away from exploring the world of education, which is amazing. हाँ जी हर्षदा, yeah ma'am, you remember me about Menti? What's about it? We'll talk about it. And you have a chance of preparing with the top educators we have at Unacademy and learn their patterns of cracking an exam, their strategies which might be helpful for you guys. And we have batches running for syllabus completion, so you don't have to worry. There is everything that is being covered for the exams that you need to be prepared for, so there's nothing to worry about. Yeah. So, and on your part, you just have to, along with buying the subscription, you just have to download this amazing app of Unacademy Learning app. तो आपके फोन्स में भी डाउनलोड हो सकती है तो कोई हैसल की चिंता नहीं है हाँ जी अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करें आप और आपको कोई बिल्कुल ही हैसल फ्री होके यू जस्ट कैन यू जस्ट अ क्लिक अवे फ्रॉम दिस and आपका ये बिल्कुल ही the phone app works as smooth as the things working on your laptop and PC, so no need to worry about that. Also, these are the subscription plans and Ananya knows pretty well. Yeah.
तो 9th क्लास के लिए 24 months will be, is the prescribed one, and instead of paying 21,000 rupees, if you use my name, that is Devyani, Devyani, तो आपको 21,000 की जगह you just need to pay 18,900, which is pretty amazing. और किसको डिस्काउंट नहीं पसंद है? Come on, है ना? And 10th क्लास के लिए 12 months की prescription subscription के लिए, instead of paying 17,500, you just need to pay 15,750 only, which is like 1313 a month, and it is super amazing, है ना? So I'm waiting for you guys at this. I'm waiting for you guys at Unacademy so that we can enjoy pretty more and we can learn even more. है ना? चलिए, let us begin. So, what are we doing today? It's acids, bases, and salts in a go. Right? The chapter in a go. हमें ये करना है आज और हमें सब चीजें रिवाइज करनी है. आपके डाउट्स आई एम हियर आपके इस चैप्टर से डाउट्स क्लियर करने के लिए. सो एज वी मूव फॉरवर्ड, जैसे जैसे टॉपिक्स आते जाएं वैसे वैसे अपने डाउट्स लाने हैं प्लीज. Yes, thank you, Harshita. Chaliye, till now we have discussed the chapter. So what is happening, how is it happening, and how are we learning things from which part of the chapter? हमें ये बात करनी है आज, right? So yeah, indicators. हमने indicators के बारे में बात किया था, right? Indicators are something that are indicating. वो अपना कोई form change कर रहे हैं. They are forming that they are changing themselves to indicate a change in environment, right? तो अगर आप एसिडिक बिहेवियर देखना चाहते हैं, बेसिक बिहेवियर देखना चाहते हैं उनके एनवायरनमेंट में, तो ये बताता है. यस हर्षिता एंड अनन्या एंड हाय प्रिंसी, व्हाट्स अप. सो या, इंडिकेटर्स के मामले में द थिंग व्हिच वी हैव टू से इज, हाय जी मोक्षित, हाय. सो या, इंडिकेटर्स के मामले में they are actually indicating you, that telling you about a change in the environment by changing themselves, by bringing a change in them. तो ये change visible भी हो सकता है एंड ओडर में भी हो सकता है, राइट? हमने ये पढ़ा हुआ है. सो विजिबल चेंजेस, दैट इज द कलर चेंजेस, उसके अंदर हम करते हैं, उसके अंदर हम कर रहे हैं. हाय रिद्धिमा. सो या, इंडिकेटर्स में देयर आर द थिंग्स व्हिच वी स्टडीड अबाउट वर नेचुरल, राइट? सॉरी, नेचुरल के अंदर हमने पढ़ा है लिटमस में एसिड्स के केस में और बेसिस के केस में क्या होता है. लेट्स क्विकली वाइंड इट अप, बताइए फटाफट. Hi Pratyaksh, hi Rishika. This class is for class 10th. We are discussing acids, bases, and salts. Yes, Mokshit, absolutely. And yes, Riddhima. And yes, Princey, absolutely right, बच्चे. Acids के केस में it is converting from blue to red, and bases के केस में it is turning red to blue. Perfect. ये तो हमें बिल्कुल ही याद हो गया है. Then the next natural indicator which we studied about was turmeric. Turmeric बच्चे acid and neutral में yellow ही रहता है. Upon the introduction of bases, it turns yellow to red. Fine. Yes. तो ये बात नेचुरल वाली सबको पता है. देन वी कम ऑन टू सिंथेटिक इंडिकेटर्स. कौन से दो सिंथेटिक इंडिकेटर्स हमने पढ़े हैं? एब्सोल्युटली अनन्या, टर्मरिक येलो टू रेड. यस, एब्सोल्युटली टर्मरिक हो गया. Which were the two synthetic indicators that we studied about? Synthetic indicators. Yes, Harshita says it's methyl orange. Perfect. ठीक है, तो एक हमने पढ़ा है मिथाइल ऑरेंज and the other one we have studied is phenolphthalein. Absolutely right. अब इन दोनों का कलर चेंज. phenolphthalein acids and neutrals के केस में it remains colorless, and on the introduction of bases it changes colorless to pink, right? Yes. Okay, check up all your spellings बच्चे, है ना? Spellings बहुत ज़्यादा गलत है यहाँ पे, so please take care of the spellings as well, right? So phenolphthalein in the cases of bases that turning colorless to pink, and methyl orange क्या कर रहा है?
मिथाइल ऑरेंज एसिड्स के केस में रेड है, देन इट इज येलो न्यूट्रल्स एंड बेसिस के केस में, है ना? यस हर्षिता एंड एनिमे, राइट, एवरीबडी गोइंग गुड। Yes, so everybody knows this. उसके बाद we studied about olfactory, that is they were changing their odor, right? तो यहाँ पे the three which we studied were vanilla essence, or you can simply use vanilla. ठीक है, vanilla essence पूरा नहीं, vanilla also would work. Then clove in the form of oil, and then your and then onions. ठीक है, तो what are they doing is acids के case में no change in odor, and bases के case में complete loss of odor, right? So this is what is happening in olfactory indicators. Yes, absolutely. ठीक है, so this is what we have studied. So shall I rub it off, because you guys were answering, तो आप लोग को पता ही है. So yeah, now we studied about the chemical reactions of acids and bases, which were pretty strongly और बहुत ही अच्छे से हमने कर लिया था. तो पहला हमने किया था कि chemical reactions में पहला था reaction with a metal. So whenever your acid was reacting with a metal, और zinc granules का हमने पढ़ा था, so a salt was formed and hydrogen gas was being released. So the salt formed over here was zinc sulfate and hydrogen gas was released, right? Right, perfect. Yes, forms salts and releases H2. Perfect. Yes, Teethankar has a question that I am teaching NCRT. Yes. Okay, Anime, I'll give time for screenshots. Pakka. Yes, and Teethankar, Bache, yes, we are covering up the, for foundation. So we have to clear everything. We have to not leave any question, any concept untouched. Along with this, after NCRT, whenever we discuss questions and I bring with me previous year questions of NTSE and everything, so उस time पे with the discussion of questions, whenever a new concept is introduced, I explain that and then we proceed further. So that is how we are going with all the chapters, right? Yes. So salt, ये वाला form हुआ. Perfect. Yes, Harshita has given another example. अब हाइड्रोजन को if we have to verify that how is this ये हाइड्रोजन ही गैस है जो रिलीज हो रही है, तो फिर I'll pass this gas from the soap solution. It will form bubbles, and these bubbles will be releasing with what? Pop sound. Absolutely right. So this gas burns with a pop sound, right? Burns with a pop sound. Absolutely right. तो ये हाइड्रोजन गैस का दिस इज द आइडेंटिफिकेशन. ठीक है. यस, मेंटी भी करेंगे हम. मेंटी भी होगा, एंड आज की क्लास में हम मेंटी का भी डिस्कशन करके जाएंगे. ठीक है. सो देयर इज अ न्यूज फॉर यू. ओके, हाय तन्वी. हाँ जी. सो ये हो गया. नाउ हाउ बेसिस रिएक्ट विद मेटल. हमने पढ़ा था दैट NaOH is reacting with zinc and you have a salt plus your hydrogen. Which was the salt that was being formed? Anybody who remembers this? Which is the salt being formed when your base, your specific base, that is your NaOH, was reacting with zinc? Same salt. Are you sure, Harshita? Because we studied a specific salt in this case, जहाँ पे हमने we have discussed bases with metal. Salt तो होता है, but कौन सा salt form हो रहा है इसमें? Because we yes, Princey has got it right. It is sodium zincate, and India 1, 2, 3 is also right. It is sodium zincate. Can anybody tell me what is the formula of sodium zincate? Fatafat se. Yeah, Harshita, salt, but I was asking specifically NaOH और zinc का हमने कौन सा salt पढ़ा था? Yes, Akash Kumar, absolutely. Na2, ZNO2, sodium zincate. So this was being formed. ठीक है. तो ये हर बेस जिंक के साथ ऐसे ही रिएक्ट नहीं करेगा टू गिव यू जिंकेट, बट दिस वाज अ स्पेसिफिक रिएक्शन ऑफ अ बेस विद योर जिंक. ठीक है.
यस प्रिंसी हर्षिता, वेरी गुड, एनिमे, परफेक्ट। तो ये हो गया हमारा पहला रिएक्शन। दूसरा रिएक्शन हमने पढ़ा था विद मेटल कार्बोनेट्स और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। सो व्हेनेवर योर एसिड इज रिएक्टिंग विद एनी मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, it gives you what? फटाफट से complete the reaction. Okay, Tirthankar and Deepti, please बच्चे get it right. It's Na2ZnO2, sodium zincate. Yes, Harshita, it's salt, carbon dioxide, and water. Perfect. So which salt will be formed over here? Okay, is there a signal interruption? Yes, NaCl. Absolutely right. India 1, 2, 3. इस केस में हमारा जो सॉल्ट है वो रहेगा NaCl, देन वाटर एंड देन योर CO2. अब ये CO2, यस एब्सोल्युटली, अनन्या हर्षदा मोक्षित रिद्धिमा, परफेक्ट, NaCl फॉर्म होगा। अब आप बताइए एनिमे बच्चे, नेटल लीफ स्टिंग इज एक्चुअली मीथेनोइक एसिड व्हिच इज बीइंग रिलीज्ड इन योर बॉडी व्हिच वी विल बी डिस्कसिंग। यस, टर्न्स मिल्की, परफेक्ट अनन्या। तो इसका रिएक्शन है लाइम वाटर के साथ। इफ यू पास, यू नो व्हाट आर यू डूइंग इज, आपके जिस टेस्ट ट्यूब में ये रिएक्शन यू नो इज टेकिंग प्लेस, इन दैट you what will you do, you'll attach a delivery tube and you'll end this delivery tube in a test tube containing what? Lime water. Lime water is your simple calcium hydroxide, right? So please remember, lime water is your calcium hydroxide. या अच्छा, ये जो बच्चे लिख रहे हैं टर्न्स मिल्की, यू नीड टू रिमेम्बर व्हाट टर्न्स मिल्की। दिस CO2 डजंट टर्न मिल्की, दिस CO2 टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, ठीक है? सो आप जो लिख रहे हैं टर्न्स मिल्की, नॉट जस्ट दैट, टर्न, व्हाट डज टर्न, और यू नो व्हाट इज बीइंग टर्न्ड इनटू अ मिल्की अपीयरेंस। तो प्लीज राइट कंप्लीटली, बहुत ध्यान से, सिर्फ ये नहीं, टर्न्स मिल्की, ठीक है? सो CaOH whole twice, Harshita has got the question perfect. So yeah, CaOH whole twice plus CO2 is giving you CaCO3 and your water. Now this CaCO3 is your white precipitate. Hi Shreya. Yes Mokshit, I get this in one comment also, मुझे दिख जाता है एक comment भी, कोई बात नहीं, उतना टाइम नहीं है आने में। ओके, यू टू बिजी, ऑलराइट। सो या, व्हाट इफ मैं ये डिलीवरी ट्यूब जो मैंने एक्सपेरिमेंट किया है जिसमें मैंने CO2 को, यू नो, आई हैव लेट दैट पास थ्रू द डिलीवरी ट्यूब एंड आई हैव एंडेड इट अप इन लाइम वाटर, व्हाट इफ आई कीप ऑन पासिंग दिस CO2, व्हाट विल हैपन देन? यस, okay Ananya, I'm sorry, I'll speed myself a bit down, right? Sorry, I'm always high Josh, no? So yeah, I'll speed myself a bit down, I'll pace down a bit. Now बताइए, अगर मैं इस डिलीवरी ट्यूब को नहीं रिमूव करती and I keep on passing this carbon dioxide, what will happen? Yes, Princey has given it given the perfect answer, perfect, and Harshita has also given the right answer. Okay, I'm waiting for the others to answer whether they know it. Yes, Ananya, absolutely. Yeah, anyway, I am like that. How is the Josh? And I want it to be high. Yes, Mokshit, that's the plan for tomorrow. Yeah, Harshita. Right, so are we done? ये सबको पता चल गया that if I keep on passing this excess of CO2 from this CaCO3 and H2, if I keep on passing the CO2, what will I get? CaHCO3 whole twice, and this thing is soluble in water, right? Now, please take a screenshot if anybody wants to before I delete all this and start with the next reaction. Yep. Okay. Chale, I'm deleting this.
यस, ओके, परफेक्ट। चलिए, सो राइट, अब तीसरा हमने क्या रिएक्शन पढ़ा था, दैट व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विद अ बेस, it gives you what and what? It gives you two things. What are those? Yeah, Harshita. Acids and base react. कोई बात नहीं मोक्ष, this once this life is over, live thing, video is over, then you will get the video on YouTube. It's okay. Yes, yes, absolutely right, everybody. This is salt and water that we are getting, and that is quite perfect, right? Now let's discuss it with an example. Take any acid, suppose HNO3, that is your nitric acid, and any base, suppose you are taking this base KOH, that is your potassium hydroxide. It will give you KNO3, right? So what is happening? That this and this will come together and will give you water. So this is potassium nitrate and you're getting water. Perfect. So yeah. Yes, neutralization, absolutely. Before I ask ये कौन से type का reaction है, Ananya is ready with the answer that it is a neutralization reaction. Neutralization का मतलब क्या होता है? Neutralization is something that we are cancelling out the effect. We are neutralizing it. So if there is acid, we'll add base to it. तो आप pH के बारे में भी जानते हैं. So if we are having somewhere pH of 1 to 7, तो आप कुछ 7 to 14 ऐड कर देंगे तो वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा. ठीक है. ओके, चलिए बेहतरीन. नाउ फोर्थ रिएक्शन वाज व्हेन मेटल ऑक्साइड्स रिएक्ट विद एसिड्स. ठीक है. नाउ योर एसिड इज रिएक्टिंग विद अ मेटल ऑक्साइड to give you the same thing, salt and water. Perfect. Yes, Ashita, absolutely. Absolutely, Anime, you know everything. You guys are geniuses. I know this is a fact. You guys are geniuses. Yeah. Yes, Ananya is already knowing the things which I'm gonna say further. So yeah, acid plus metal oxide is giving you salt and water. Now what was the other reaction? क्या हमने ये भी एक मिनट पहले यही बोला कि acid plus base also gives you the same thing, है ना? तो इसका मतलब क्या है? That bases or your metal oxides are basic in nature, है ना? And इसका उल्टा मतलब non-metallic oxides are acidic in nature. ठीक है. Yes, absolutely right. Yeah. Yes, from equation 1 and 2. Perfect. अब हम डिस्कस कर लेते हैं किसी को. Anybody can state over here an example of acid reacting with a metal oxide to give you salt and water. Anybody can come up with this example. बताइए. Any acid reacting with any metal oxide to give you a salt and water. Anybody can come up with an example, please. Yeah, Harshada, you guys are attending classes from the starting. Yeah. Okay, anime has this equation sorted. Perfect. Very good. And anime and Princey is also nice, nice. And then Ananya and Harshita. Perfect. Yes. Okay, so any acid reacting with your acid is reacting with your metal oxide, might be CuO or your ZnO or your MgO, whatever. It's gonna give you a salt. In this case, CuCl2, or in this case ZnCl2 or MgCl2, and it's giving you H2O. Right? So we are sorted.
perfect. Okay, Ashish. That's information. Yeah. चलिए फटाफट से take a screenshot if you want before I delete it. Okay, Princey, if I do, then okay. अनन्या, ओके अनन्या, ठीक है, अभी ना जब मैं पढ़ा रही हूँ तब बताना, ये पहले पहले से नहीं यार, स्पॉयलर्स नहीं देने क्लास में. हाय हर्षवास. Okay, perfect. I'm erasing all of that and we are moving on to the next thing. Yeah, acids conducting electricity. So how are acids conducting electricity? Okay, they are maintaining social distance. Perfect. Yes, Harshita, absolutely. So what is happening over here is acids and bases के case में, in both the cases, they're diluted forms, they're aqueous forms, जिसके अंदर you're mixing them up with water. They are conducting electricity. Why? Because they are furnishing ions. ठीक है? Absolutely. So they are having ions, not just H plus, but अब इसमें क्या है, conduction of electricity में positive, negative हमें दोनों ही ions चाहिए, दोनों ही ions हमें लगेंगे. So that is why they are able to pass the current. So this is not just because of H plus, not just because of OH minus. In the case of bases, they have both the types of ions. So they are splitting into ions, they are furnishing ions. That is why they are able to conduct electricity, they are able to transfer the electrons. Yeah. So HCl के केस में it is giving you H plus as well as Cl minus. NaOH के केस में it is giving you Na plus as well as OH minus. Conduction of electricity में I need not just एक ही टाइप का मुझे ये आप जैसे बोल रहे हैं कि एसिड्स H प्लस दे रहे हैं, बेसिस OH माइनस दे रहे हैं. It's not just this. Conduction of electricity में I need both the ions, positive as well as negative, because the conduction, the passing of current requires both of them, right? Okay, okay, okay. Please focus on the chapter. Please, I'll request. नहीं, मैं नहीं हूँ उसकी बहन यार. Yeah, Ananya, yes, yes. HCl and H2 giving you H3O plus. But Ananya, you need to understand this now. Now, ये जब हम बात कर रहे हैं वो सिर्फ हम water की बात कर रहे हैं कि water में acids give you H plus and bases give you OH minus. When you are commenting about conducting electricity, then you require both the types of ions, positive as well as negative. आपने कभी भी देखा है, कभी भी हम सिर्फ एनोड लगा सकते हैं क्या? हमें एनोड और कैथोड दोनों लगाना पड़ता है ना. तो इसका मतलब है कि आपको जब तक कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. आशीष, ओके, आई गॉट इट. प्लीज स्टॉप स्पैमिंग अबाउट दिस. प्लीज लेट अस focus on this acids, bases and salts. It's an important chapter, please. Yeah. ओके, बार बार लैग हो रहा है. कोई बात नहीं, आप अपना प्लीज कनेक्शन चेक कीजिए. ठीक है. So yes, when you talk about acids conducting electricity, or there is a question about bases conducting electricity, then you have to say because acids as well as your bases, they are splitting into, or they are dissociating into ions, whether positive or negative. है ना? तो चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, वो आयंस में डिसोसिएट हो रहा है. सो दे आर बीइंग डिसोसिएटिंग. सो ये डिसोसिएशन जो है
डिसोसिएशन का मतलब होता है टूटना, टू गिव यू, है ना? ओके, ओके लिसन स्टूडेंट्स, जिन्हें हम हमें हमें यहाँ पे पढ़ना है, हमें यहाँ पे बहुत अमेजिंग चीजें करनी है और हमें क्रैक करने हैं एग्जाम्स, तो हम हेट कमेंट्स की तरफ ध्यान नहीं देंगे, हम कुछ भी बात नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, हम पढ़ाई करेंगे और हम केमिस्ट्री बहुत ही अमेजिंगली सॉल्व करेंगे. सो प्लीज यू लेट people say anything they want to. And Mokshit, is it still lagging? सबका लैग हो रहा है क्या? बिकॉज मेरी तरफ से इट इज परफेक्टली फाइन. मेरी तरफ से द नेट थिंग इज ऑलरेडी गुड. सो प्लीज चेक अप विद योर कनेक्शंस. अनन्या, हमें ध्यान ही नहीं देना है, हमें काम करना है. एब्सोल्युटली राइट. इफ somebody is not liking to be here, they may leave, है ना? ओके चलो, परफेक्ट. अब हमें पढ़ना है. बहुत अच्छा. अच्छा, हम क्या बात कर रहे हैं? इलेक्ट्रिसिटी की. इलेक्ट्रिसिटी के लिए आप हमेशा एग्जांपल लीजिए अपना एनोड और कैथोड का, कि आपको दोनों ही इलेक्ट्रोड चाहिए होती हैं, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी. तो सिमिलरली यू नो देयर इज अ ट्रिक टू रिमेंबर दिस. सो यू आर यू नो चलिए चलिए, पढ़िए पढ़िए पढ़िए. थैंक यू अनुज, थैंक यू एवरीबॉडी हु इज इन सपोर्ट. बट पढ़ते हैं हम अभी, हमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, हमें क्रैक करना है. सो वी आर गोना क्रैक इट. यस. सो चलिए. सो व्हाट वर वी डिस्कसिंग? कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डील्स विद बोथ द आयंस, है ना? सो हाउ इज दिस पैसेज ऑफ करंट? आपने बैटरी देखा, उसमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड दोनों ही तो होता है. तो हमें मतलब नहीं है कि क्या क्या सिर्फ पॉजिटिव एंड सिर्फ नेगेटिव से. सो समथिंग पासेस बाय द अरेंजमेंट ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव. तो अगर कोई भी चार्ज जो है, चार्ज पास ऑन करता है, एंड दिस ट्रैवल ऑफ चार्ज इज गिविंग यू करंट. ठीक है, तो करंट को पास होने के लिए, यस यस शनि पांडे, आई एम ऑन फर्स्ट प्लेटफॉर्म एज वेल. सो या, हम अब इस करंट को पास होने के लिए यू हैव दिस अरेंजमेंट ऑफ दिस पॉजिटिव नेगेटिव. तभी तो आपका बैटरी जो होता है, जो आप अटैच करते हैं, इट हैज नेगेटिव पॉजिटिव. तो आप इन्हीं चीजों को लिंक करके समझिए कि डिसोसिएशन इनटू आयंस, ये पहले आयंस में डिसोसिएशन हो रहा है, इसकी वजह से ही देयर इज द कंडक्शन, द पैसेज ऑफ करंट विच इज हेल्पिंग इन द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. परफेक्ट. ठीक है. अब हम बात करते हैं एसिड्स एंड बेसिस का बिहेवियर इन वाटर की. अब हम बात करेंगे H प्लस फॉर एसिड्स एंड OH माइनस फॉर बेसिस. सो दिस इज हाउ वी आर कंक्लूडिंग. हम स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे. ठीक है. तो कंडक्ट, हाँ जी. तो फिर अब हम स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे. मैं बोल रही थी, तो जब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए उसने पॉजिटिव भी दिया, नेगेटिव भी. इसी के बाद तो हमने एक स्टेटमेंट दिया दैट इन वाटर, in water acids give you H plus and bases give you OH minus. ठीक है. तो this came as a result, this statement, जो हमने स्टेटमेंट दिया कि जो H plus ions फर्निश करते हैं वाटर में वो एसिड्स होते हैं, जो OH minus फर्निश करते हैं वो बेसिस होते हैं. तो हमारा ये स्टेटमेंट कहाँ से आया? हमारा यहीं से आया कि every acid and base is being dissociated into a positive charge and a negative charge, and that's how they are conducting electricity. Right? I hope this is clear. परफेक्ट है. अब क्या होता है हाइड्रोजन आयंस के केस में, दे आर नेवर एग्जिस्टिंग एज हाइड्रोजन आयंस नहीं बोलते हैं. तो या तो उन्हें H प्लस की तरह रिप्रेजेंट करना पड़ता है, या फिर दिस H प्लस इन एक्सेस ऑफ वाटर ऑल्सो इज गिविंग यू H3O प्लस आयंस विच आर योर हाइड्रोनियम आयंस. ठीक है. सो वेन एवर यू टॉक अबाउट एसिड्स, यू हैव टू either you have to write H plus or you have to write H3O plus, है ना? Absolutely right. तो बेहतरीन है, हमें समझ आ रहा है what's happening and what's not. Perfect. So that is how we move on to acids and bases conducting electricity, to the fact that acids and bases furnish H plus or H3O plus and OH minus respectively. Right? Okay, Rudhima, I'm gonna repeat. Now, what has happened is acids and bases के case में बच्चे, what is happening over here in their diluted forms, they are giving you. Yes, Teethankar, I'm trying to explain over here. And Gaurav, please stop spamming with one comment every time.
तुम्हारा एक कमेंट होता है और वो 10 बार होता है। मेंटी की बात करेंगे हम एट द एंड ऑफ द क्लास, उससे पहले मैं मेंटी की बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है। एंड यस हर्षिता, यू आर राइट, द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड डिपेंड्स ऑन दैट, बट वी आर नॉट ऑन दैट, सो रुकिए, है ना। चलिए, ओके ओके, अब ये सॉरी सॉरी करके मत स्पैम करना, अब तुम एक बार सॉरी हो गया, अब ठीक है। चलो, अब हम बात करते हैं जिन दो लोगों को मुझे समझाना है इसे। यस, perfect Harshita. So yeah, what is happening over here is that आप एसिड्स कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी के टॉपिक से शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो अब इलेक्ट्रिसिटी, ओके वी हैव अनदर वन, ठीक है। हाँ, तो अब हम क्या कर रहे हैं, एसिड्स कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी में एसिड्स एंड बेसिस दे आर फर्निशिंग पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव आयंस, ठीक है। अब एसिड लाइक HCl इज गिविंग यू H प्लस एज वेल एज Cl माइनस, एंड ये जो जो चार्जेस हैं, जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस दोनों रिलीज हो रहे हैं, इन्हीं आयंस की वजह से हमारा ट्रैवल जो है, करंट का, चार्जेस का ट्रैवल है, वो पॉसिबल हो पा रहा है, ठीक है। एंड यही पॉसिबिलिटी की वजह से वी कैन मेक अ स्टेटमेंट कि हम जो हमारे एसिड्स एंड बेसिस है वो कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ऑल राइट आदेश, आई एम, यस आई विल बी एक्सप्लेनिंग इन हिंदी। तो क्या हो रहा है बच्चे, एसिड्स और बेसिस में, एसिड्स बेसिस जो है डाइल्यूटेड फॉर्म में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के आयंस देते हैं, और ये दोनों तरह के आयंस देने के बाद ही क्या हो रहा है, दोनों तरह के आयंस है तभी वो चार्ज पास हो रहा है, ठीक है। और चार्ज पास होने से आपका, करंट प्रोड्यूस हो रहा है, और ये करंट इज द रिस्पॉन्सिबल थिंग फॉर इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी कैसे हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कैसे कर रहे हैं एसिड्स एंड बेसिस, क्योंकि वो डिसोसिएट हो रहे हैं अपने आयंस में। तो डिसोसिएशन ऑफ, ओके, yes Princey, yes, absolutely right, we are not putting up this. And Shafreed, bachche, please don't worry, don't make chemistry your weak point, it's such an amazing thing, it's such an amazing subject, please give us a chance to make it good for you. Yes Ananya, कल भी लाइव क्लास होगी। हाय अनाया, इट्स ओके इफ यू आर लेट। यस, तो हम बात कर रहे हैं एसिड्स एंड बेसिस की, प्लीज लेट अस बी क्लियर विद इट, एक पॉइंट पे हमें स्टक हुए बहुत टाइम हो गया है, तो या ओके शनि, आई लुक आउट कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो अभी आप यहाँ पे, आप यहाँ सुनिए क्या हो रहा है यहाँ पे। यस अनन्या, आई टोल्ड यू कल होगी। हाँ मैम है तो सब मुमकिन है, ठीक है। इंग्लिश में मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि एसिड्स कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी, हाउ इज इट बीइंग पॉसिबल। हिंदी में बच्चे, डिसोसिएशन पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में होगा आयंस में, एंड ये पॉजिटिव नेगेटिव ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं चार्ज को पास करने के लिए। ये चार्जेस पास करते हैं तो इलेक्ट्रो करंट प्रोड्यूस होता है, और इस करंट प्रोडक्शन से ही इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो इसीलिए आपके जो डाइल्यूट एक्व सॉल्यूशंस है एसिड्स और बेसिस के, वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में समझा दिया है, परफेक्ट। अब बात करते हैं कि ये जनरेशन तो हो गया आयंस का, पॉजिटिव भी दे दिया नेगेटिव भी दे दिया, बट व्हाट इफ व्हाट बी द केस कि वाटर में क्या होता है। तो अब हमने ये देखा, या इट्स ओके, ओके मुसीना, आई जस्ट हमने पहले इंग्लिश में ही एक्सप्लेन किया था, फिर उसके बाद हम हिंदी में आए थे। Acids conducting electricity, in that case bachche, what is happening is that positive and negative, both the kind of ions are being released or being dissociated. Acid is dissociating, and acid as well as bases are dissociating into positive and negative ions, and these positive negative arrangement is the responsible thing for the travel of charge or the passing of current. And this passage of current is what, generation of electricity, right? So what is happening over here, इन वाटर, पानी के अंदर क्या हो रहा है, पानी में जो एसिड है एंड जो बेस है, तो एसिड्स जो है नॉर्मली HCl जो था वो H प्लस और Cl माइनस रिलीज कर रहा था, एंड NaOH आपका Na प्लस एंड OH माइनस दे रहा था, राइट। तो अब पानी में स्पेसिफिकली इन द केस ऑफ वाटर, व्हाट इज हैपनिंग इज दैट एसिड्स आर गिविंग यू
H प्लस आयंस दे डिसोसिएट इनटू H प्लस, है ना, तो वो एसिड जो है वो H प्लस ही देते हैं, तो वो पानी में H प्लस देंगे, H प्लस। हाँ प्रिंसी, दिस इज व्हाट आई वाज फियरिंग कि कोई फ्रेंच ना बोल दे। या तो अब एसिड हो गया, H प्लस दे रहा है। ओके अनाया, हाय सुमन जी, हाय सौरभ। So yeah, what we were discussing that in the case of water या पानी के केस में एसिड जो है आपका H प्लस आयंस दे रहा है, बेस आपका OH माइनस आयंस दे रहा है. So acid is furnishing H plus and base is furnishing OH minus. Now this H plus या तो हम हाइड्रोजन को जो है वो उनको हाइड्रोजन आयन को H प्लस की तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर दिस H प्लस अलोंग विद वाटर गिव्स यू H3O प्लस विच इज योर हाइड्रोनियम आयन. ठीक है, हाइड्रोनियम आयन है ये. So this is H3O plus is your hydronium ion, and this is furnished by the H plus released by the acid, which when combines with the molecule of water, right? So this is how H3O plus is formed. Hi Janya. So yeah, are we clear? So what is happening in acids and bases? Along with this, one word introduction is alkalis, जिसके बारे में हर्षिता and Ananya have been talking about. Yeah. सो एल्कलीज के केस में एल्कलीज क्या होते हैं, जो बेस कंपाउंड, जो बेसिस आपके वाटर में सॉल्युबल होते हैं वो एल्कलीज होते हैं, एंड जो बेसिस वाटर में सॉल्युबल नहीं होते वो एल्कलीज की कैटेगरी में नहीं आते हैं, राइट? तो अब एल्कलीज आर द बेसिस विच आर सॉल्युबल इन वाटर. परफेक्ट. या सब लोग अनाया की बात मानो. Perfect. Now moving on to the next. Please take a screenshot whoever wants to. Yes, yes, yes. Saurabh, no, I am not, I guess. Everybody with the same surname are not your brothers and sisters. It's okay. Yeah. Yes, absolutely, Ananya. Base is soluble in water. Perfect. Okay, screenshot taken. Now let us proceed. What are you saying? Bland's glucose? Sumanji, I'm not getting your question. Please, bache, be specific. So yeah. Strength of acids and bases. We started off with universal indicator, right? अब universal indicator, when we talk about universal indicator, what do we mean? जो भी indicators हमने पहले पढ़े हैं, the indicators which we have studied before, they came under wide range. अब जैसे litmus था, तो it gave a red color for all the, yeah. Okay, Ridhima is saying to me to balance glucose, but in what reaction? Like balance glucose, how? I'm not getting this. Yeah, so universal indicator is something. Universal indicator क्या होता है? जब आपने indicators की बात की, and when you were talking about litmus, so litmus gave you red color for all the acids, and it gave you blue color for all the bases. It was not being specific, but now we want something more specific. So how do we get that? Is universal indicator uses a group of indicators. ठीक है? So it's using a group of indicators to give you specific colors or specific indications about the change. ठीक है? नहीं गौरव, मैं तुम्हारी बात भी सुनती हूँ. तुम्हें तुम्हें तो आज डाटा ना मैंने कि बार बार स्पैम मत करो सेम कमेंट से. या एंड हर्षिता अनन्या, इनकी भी बात सुनती हूँ, मैं सबकी बात सुनती हूँ. I'm reading all the comments over here. Don't think that you are going away with any comment. Yes, yes, yes. तो इंडिकेटर्स की बात ये थी कि इंडिकेटर्स हमने जो पहले डिस्कस किए थे वो वाइड रेंज इंडिकेटर्स, बट यूनिवर्सल इंडिकेटर इज समथिंग वेयर वी आर टेकिंग अ ग्रुप ऑफ इंडिकेटर्स, एंड इस ग्रुप ऑफ इंडिकेटर्स में हमने सबके स्पेसिफिक वी आर यू नो सीइंग द कलर चेंजेस, एंड पीएच इज एन एग्जांपल ऑफ दिस यूनिवर्सल इंडिकेटर. ठीक है, पीएच इज एन एग्जांपल. वी हैव 14 डिफरेंट कलर्स वेरिंग इन द रिवर्स रेंज ऑफ विबग्योर.
ठीक है, तो यहाँ पे 14 रहता है और यहाँ पे 1 रहता है पीएच वैल्यूज। एंड ये बेसिक साइड हुआ और ये एसिडिक साइड हुआ। तो दिस इज व्हाट योर पीएच स्केल इज ऑल अबाउट। And yes, pH, there are a lot of comments. Yes, Mokshit, pH means the power of hydrogen. Absolutely. So this is P and this is H. So this is the meaning, this is for potens. That is a German word for power. And yeah, it is the power of hydrogen. Now, how we discuss this is a topic further. Okay? Okay, Princey, you're. Yes, Princey, you're right. Perfect. चले, so what is happening over here in universal indicator pH जो है उसमें 1 to 14 there are values, and जैसे जैसे आप 1 से 14 में जाएंगे the red you will start off with red, orange, yellow, green, blue, indigo and violet. So you will get the reverse Vibgyor. Also starting from 1 the acidic character or the acidic property will be highest. जिनका वैल्यू 1 है वो स्ट्रॉन्गर एसिड्स है than जिनका वैल्यू 5 है या 6 है. ठीक है, right. Potens is actually yes, it's a German word. Yes, yes, bache, Mokshit, the colors are changing, right? So yeah, the midpoint being 7. 7 is for neutral things, like it is for neutral things. Perfect. Yes, acids less than 7, then 7 is for neutral compounds, then more than 7 is basic. Perfect. And Ridhima, your sign is actually wrong. It will be acid is lesser than less is lesser than a base. So instead of using these signs, it is wrong. It will be this. Please be careful. Yep, Ananya. Absolutely. Chaliye, so strength of acids and bases is all about discussing the pH. Also, about pH, इसमें क्या है? As your concentration, these brackets, the square brackets आर अ मीनिंग ऑफ कंसंट्रेशन. ठीक है, तो इन स्क्वायर ब्रैकेट्स में अगर मैंने H प्लस लिखा है तो इसका मतलब कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस इन द सोल्यूशन. ठीक है, परफेक्ट. सो H प्लस आयंस का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तो हमारा एसिडिटी या एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, पीएच उतना ही कम होगा. ठीक है, सो प्लीज focus on this is the trend which goes. So as you know, as we increase the concentration of H plus, हमारा H plus आयंस का concentration ज्यादा होगा तो वो stronger acid होगा. तो stronger acid का मतलब आपका pH कम होगा. So please focus on this. Right, Harshita? So yeah, this is what is happening over here. Also, ये तो हो गई H plus के रिगार्ड में, बट हमें बेसिस के रिगार्ड में भी बात करनी है. तो OH minus का concentration as it increases, the basicity increases or the base will be stronger and the pH will increase. ठीक है, तो सबसे कम pH में H plus ज्यादा होगा, OH minus कम होगा. सबसे ज्यादा pH में OH minus ज्यादा होगा और H plus बहुत कम होगा. Fine. Do we get the trend? Perfect. So this is what is happening over here. Right. Chaliye, let's proceed. We are done with strength. All right. Thank you, guys. This was. Now we are coming to salts. Right. Yes, Ananya. And Princey has a question that what is the basicity of HCl? Basicity of HCl is what? कि अगर उसमें there is OH minus concentration in its water form or anything, then that is how we'll relate it to that. But now, for now, the pH scale reading and for HCl, you need to know that it is acid. है ना? चले, family of salts पे. You guys might have gone through the lecture yesterday. So उसके अंदर क्या था हमारा? Salts कैसे बनते हैं? Salts हमें पता है, an acid reacting with a base is giving you a salt. Perfect. So whenever these acids and bases are reacting to give you a salt, I gave you a little homework yesterday that I had given you a list of salts and I asked you to, and I broke them up in acids and bases and I asked you to find out whether they'll be acidic or they'll be basic or they'll be neutral. I hope you guys have done it. I hope that you guys have understood it. है ना?
या सो अब क्या हो रहा है यहाँ पे, दैट योर salts are formed by an acid reacting with your base, right? So अब in acids and base की strength will decide the property of the salt, and which we have discussed a lot. Ma'am, can you say how you dilute solution and concentrated solution? Please clarify. All right, Mokshit, we'll be clarifying this after this topic. Pakka. Okay, Ananya, pretty cool. I hope the voice is clear now. Sorry about it breaking. So yeah, what is happening over here? The strength of acids and bases will decide the nature of salt that we have. So if we have a strong acid and a weak base, ठीक है, तो strong का character जो है वो dominate करेगा, तो आपका salt जो है वो acidic होगा. So if you have a strong acid and a weak base, it's gonna give you a an acidic salt. If both of them are strong, right? If both of them are strong, then we'll have a neutral salt. And if acid is weak and the base is strong, then we'll have basic salt. Pretty simple. Absolutely, Harshada. Right? Anji, so Mokshit has had a question that please tell about the dilute and concentrated acids and salts. So what is happening over here when we talked about the concentration of H plus and OH minus? अगर आप किसी एसिड में हमारे क्या होता है H plus ions, ठीक है? Now if you decrease the H plus ion concentration by adding water to it, then you are saying that you are diluting the acid, ठीक है? Because if you add water, the effect of free H plus ions will decrease. है ना? Hello, Gaurav Mishra. So yeah, people dealing with dilute and concentrated acids and bases need to know this, that when you are decreasing the concentration of H plus ions by adding water or by adding any other solvent, then you are diluting it. And same is the case of OH minus. If you are decreasing the concentration of OH minus, then you're diluting the base, right? Now, if the concentration of H plus or the concentration of OH minus is higher, then the solutions are concentrated. Perfect. So that is how things are working over here. Okay? I hope it's pretty clear. Yeah. Mokshit ready? Is it clear? It was your doubt. I hope it's clear now. Titration is a process where you are finding an end point. You are adding, you're slowly adding your either your base or your indicator to the solution, and when the point at which the concentration surpasses, the point at which the H plus ion concentration is surpassed by the OH minus and OH minus comes into play. Suppose I have, I have a 10 ml of acid, and it is neutralized by 8 ml of an acid. So let's take this example. Pretty fun. Titration समझते हैं. तो titration में क्या हो रहा है? Okay, Ananya Shah, you're a new student. Welcome. तो टाइट्रेशन में बच्चे क्या हो रहा है, दे आर बीइंग क्लैरिफाइड, आई एम क्लैरिफाइंग इट फर्दर, 1 मिनट लगेगा इसमें, दैट इफ आई हैव अ 10 ml बेस विच इज न्यूट्रलाइज्ड बाय 8 ml एसिड, ठीक है, तो अगर इसमें मैं 8.1 ml एसिड डाल दूंगी तो दिस 0.1 ml विल इंक्रीज द एसिडिटी, एंड ये इंडिकेटर विल बी एडेड, एंड एन इंडिकेटर विल बी एडेड जो बता देगा कि आपका ये एसिड हो गया है. तो जब तक वो नॉर्मल रहेगा, या फिर आप ये देख सकते हैं कि 8 ml एसिड इज न्यूट्रलाइज्ड बाय 10 ml ऑफ बेस. तो अगर आप फिनोफ्थलीन इंडिकेटर ले रहे हैं, सो इफ यू आर यूजिंग फिनोफ्थलीन इंडिकेटर, तो दिस फिनोफ्थलीन हमें पता है कि ये एसिड्स में और न्यूट्रल चीजों में कलरलेस रहता है. तो जब तक ये एसिडिक कैरेक्टर है, तो तब तक ये कलरलेस रहेगा. जब तक न्यूट्रलाइज होगा तब तक भी ये कलरलेस रहेगा. बट जैसे ही आप 10.1 ml बेस डाल दोगे, तो मतलब आपका बेसिसिटी हायर हो जाएगा, और ये बेसिक कैरेक्टर से दिस फिनोफ्थलीन विल गो फ्रॉम कलरलेस टू पिंक. So this is what is happening in titration.
ठीक है गौरव झा भी रिपीट कर रही हूँ एंड संजय कुमार यू आर ऑल्सो न्यू स्टूडेंट वेलकम एंड अनन्या ओके आप you have come by other Ananya that is pretty amazing so the two Ananyas welcome या गौरव साहब मैं हिंदी में रिपीट कर रही हूँ अगर हमें 8 ml एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए 10 ml बेस लगता है ठीक है एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए बेस लगेगा तो अगर मुझे 8 ml एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए बेस चाहिए और मैंने उसके अंदर फिनोफ्थिलीन इंडिकेटर डाला हुआ है तो इंडिकेटर जो है वो एसिड और न्यूट्रल कंडीशंस में कलरलेस रहता है फिनोफ्थिलीन है ना अब जैसे ही 10 ml पूरा डल जाएगा तो मतलब पूरा का पूरा आपका एसिड न्यूट्रलाइज हो गया है तो जैसे ही बेस आपका 10.1 ml डला वैसे ही फिनोफ्थिलीन को बेसिक एनवायरनमेंट मिल गया और वो पिंक कलर का हो गया ठीक है परफेक्ट सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन योर टाइट्रेशन चलिए हमें सॉल्ट्स की बात करने दीजिए अब मैं ये टाइट्रेशन वाला पार्ट इरेज कर रही हूँ एंड ये डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड भी समझ आ गया ठीक है so when we are discussing about salts an acid and a base are forming salt या एन एसिड एंड अ बेस आर फॉर्मिंग सॉल्ट एंड जो एसिड और बेस का प्रॉपर्टी या स्ट्रेंथ होता है वही डिसाइड करता है कि आपका सॉल्ट जो है उसका कैरेक्टर क्या होगा वेदर इट विल बी एसिडिक और इट विल बी बेसिक अब एक बात होती है फैमिली ऑफ सॉल्ट्स की जो आपने कल पढ़ा था फैमिली ऑफ सॉल्ट्स में अगर आपके केटायन सेम है दोनों सॉल्ट्स के तो इसका मतलब दे बिलोंग टू अ सिमिलर फैमिली ऑफ दोज केटायंस अगर आपके एनायन सेम है तो फिर सिमिलर एनायंस के फैमिली से वो बिलोंग कर रहा है ठीक है परफेक्ट है तो इसका मतलब अगर हम यहाँ पे एग्जांपल देख रहे हैं NaCl NaCl will give you sodium chloride is NaCl NaCl will give you Na plus and Cl minus sodium sulfate is hi Pragya yeah I am Gautam also yeah what's your caste I don't know I'm just Gautam हाँ जी सोडियम सल्फेट इज गिविंग यू सोडियम एंड सल्फेट परफेक्ट है तो यहाँ पे सोडियम और सोडियम सेम है सोडियम सोडियम सेम होने से हम ये बोल सकते हैं that sodium chloride and sodium sulfate belong to the family of sodium ions Na plus ions right perfect Jani understands this so yeah what is happening in this is sodium chloride again NaCl and Hanji Ananya what you just wrote ma'am yes NaCl is giving you Na plus and Cl minus no Pragya you not mean it's okay chill yeah no please yeah so NaCl is giving you Na plus and Cl minus KCl was giving you K plus and Cl minus so now here Cl minus are same right now this is a I can say that sodium chloride and potassium chloride are belonging to the same family of chloride ions, right? So this is what we were. This is what is the case when we talk about the family of salts. I hope the signal is pretty clear now, Ananya. We have another Ananya also. Henna? So this is what is happening over here. Perfect. Now pH of salts. I am not repeating this because all this is belonging to this. पीएच ऑफ सॉल्ट्स में क्या हो रहा है कि अगर आपका सॉल्ट एसिडिक है न्यूट्रल है या फिर बेसिक है तो उसका पीएच क्या होगा यस लेजेंड नेवर डाई हम उस पर भी करेंगे बात एंड श्रेष्ठ आई एम नॉट येट अवेयर ऑफ द झारखंड कट ऑफ बच्चे बताइए पीएच ऑफ सॉल्ट में एसिडिक सॉल्ट का पीएच कितना होगा न्यूट्रल सॉल्ट का कितना होगा और बेसिक सॉल्ट का कितना होगा यस इट डज हर्षिता एब्सोल्युटली तो फिर अब जब मैंने ये बोल दिया है कि राइट हर्षिता राइट pH of salt depends on amount of acid or base while the neutralization yes Ridhima my question is कि pH of salt मतलब अभी हमने डिसाइड किया कि सॉल्ट के भी तीन तरह के होते हैं एसिडिक न्यूट्रल और बेसिक
वो एसिड और बेसिस की स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है ना। तो अब हमें ये बताना है कि सॉल्ट अगर एसिडिक, न्यूट्रल और बेसिक होगा तो उसका पीएच कितना होगा, उसकी पीएच की रेंज क्या होगी। लेजेंड्स नेवर डाई। प्लीज आप अपने साइंस देखिए, आपने जो साइन लगाए हैं वो गलत है। गौरव झार, ये क्यों है डिस्क्रिमिनेशन। हर्षिता, साइन, why are you guys being so careless with the signs? This is less than and this is greater than. For Einstein International Scholarship, because you are selected for this. So let me give me one day. I'll give you the confirmation tomorrow with the syllabus. I need to go through the syllabus of that scholarship. If that syllabus has this chapter, then of course it is very useful. Okay. So yeah, acidic में the pH will be less than 7. ठीक है. Neutral में the pH will be 7 and basic में the pH will be greater than 7, right? So I hope the signs are pretty clear. Yes, Moksha, the trend is nice. Ridhima, absolutely right. तो ये रहेगा आपका pH of salt का trend भी. ठीक है हर्षिता, I hope you got this. Yes Ananya, yes. ठीक है, moving on. Let's move on. कॉमन सॉल्ट आप सबने पढ़ा था NaCl. NaCl कॉमन सॉल्ट होता है, हमें पता है, which is used in our kitchen and it is neutral in nature. Why? Because it is formed by NaOH and HCl. So this is the acid and the base which is used to form this salt, and both of these are okay. Harshita, your answer is still wrong. Basic, बच्चे, you are writing basic में less than 7. How will it be less than 7? Ananya, at the end of the class, we'll be discussing when is your mentee. Because I have a date. मैंने डेट डिसाइड कर लिया मेंटी का, तो आपको इस क्लास के एंड में पता चल जाएगा. एंड हर्षिता प्लीज, दिस इज द रॉन्ग आंसर बिकॉज बेसिक का पीएच अगर 8 होता है एंड 8 इज नॉट लेस देन 7, है ना. हेलो अर्पित एंड रिद्धिमा, यस बेसिक इज एक्चुअली, बेसिक का pH is greater than 7. So please be aware. Please, be careful with the signs. The lesser than or greater than. Please be careful. हम सॉल्ट्स की बात कर रहे हैं फटाफट से. कॉमन सॉल्ट के केस में, yep. So common salt के केस में NaCl is your common salt, which is your sodium chloride, and it is formed by NaOH and HCl. Since this NaOH is a strong base and this HCl is a strong acid, तो strong will give you a neutral salt, है ना. अभी हमने यही बात की थी कि अगर एसिड और बेस दोनों स्ट्रांग होते हैं तो फिर जो आपका सॉल्ट फॉर्म होगा वो न्यूट्रल होगा. ठीक है. Now this common salt was formed by the evaporation and the recrystallizations of your sea water. अब जो वहां पे खुद ही natural evaporation से sea water evaporate हुआ है, वहां पे जो आपको salt मिलता है. Okay, हर्षिता, if you are getting confused, please be clear, है ना. आप ये प्लीज अपनी कंफ्यूजन दूर कीजिए, बिकॉज आपको पता नहीं है कि आपके एग्जाम में किस पैटर्न में क्वेश्चन आ जाए. अगर साइंस आ जाए तो प्लीज, आई रियली डोंट वांट यू टू लूज मार्क्स ऑन सच छोटा सा बात, है ना. अब रॉक सॉल्ट की बात करते हैं. रॉक सॉल्ट में बच्चे, जब भी हमारे सीज जो है, जो बाइगॉन एजेस में इवेपोरेट हुए थे, तो वहां पे जो लम्प्स हैं, दे आर ब्राउन इन कलर बिकॉज दे हैव अ लॉट ऑफ इम्प्योरिटीज एंड दे हैव अदर सॉल्ट्स, क्योंकि सी वाटर में और भी मिनरल्स हैं जिनके सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है. तो अब उन सॉल्ट, वो सॉल्ट भी प्रेजेंट है इस सॉल्ट के साथ, तो वो पिंक इन और ब्राउनिश इन कलर होता है, तो उसको हम रॉक सॉल्ट बोलते हैं. ये सॉल्ट की, हमारे जो NaCl है, उसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं जो आपने कल पढ़ी है ना. हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रोसेस पढ़ा है कि हमें NaCl से सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे मिलेगा. वी फॉलोड द प्रोसेस ऑफ क्लोर एल्कली प्रोसेस. हाँ जी, हमने क्लोर एल्कली प्रोसेस यूज किया था. और इस क्लोर एल्कली प्रोसेस का मतलब था, इसका नाम ऐसा क्यों था, क्योंकि इस प्रोसेस के रिजल्ट में
हमें क्लोरीन भी मिला है और हमें एल्कली भी मिली है। एल्कली क्या है? जो बेस वाटर में सॉल्युबल होते हैं, इसका मतलब NaOH जो है वो वाटर सॉल्युबल बेस है। ठीक है, तो अब हमने क्या देखा कि अगर आपने इलेक्ट्रोलिसिस या फिर आपने इसको इस चेंबर में रखा है जिससे आपने जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हुआ है जिसमें, ठीक है, उस केस में अगर ब्राइन है तो ब्राइन है पुष्पराज भट्ट, नमस्ते बच्चे। हाँ जी, तो आपका जो ब्राइन है, ब्राइन इज योर एक्वस NaOH। ठीक है, एक्वस NaOH इज नोन एज ब्राइन। तो जब आप ब्राइन सोल्यूशन को पास करते हैं इलेक्ट्रिसिटी से, तो फिर आपको क्या मिल रहा है इसमें? NaCl and H2O are giving you NaOH aqueous। ठीक है, तो ये NaOH aqueous प्लस क्लोरीन प्लस हाइड्रोजन, तो ये सब आपको मिल रहा है। और इन सभी चीजों की, इन तीनों चीजों की बहुत ज्यादा यूजेस हैं। ठीक है, ये हमने कल पढ़ लिया है। ठीक है, तो इस नॉट वी आर नॉट जस्ट स्टॉपिंग ओवर हियर। हमने NaCl से हमें NaOH मिल गया है, इस NaOH के साथ साथ हमें क्लोरीन भी मिला है और हाइड्रोजन भी। अब ये क्लोरीन हमें फर्दर एक और एक और जगह एक और सॉल्ट देने जा रहा है। ओके, पुष्पराज इज वॉचिंग अस फ्रॉम नेपाल, दैट इज वेरी नाइस। हाँ जी, दिस क्लास वाज नो मेंटी। आज मेंटी नहीं होना है, मेंटी जब होगा वो उसकी डेट आपको इस क्लास के एंड में पता चलेगी, बीच में मैं नहीं बता रही हूँ। ठीक है, चलिए। तो हाँ, NaCl और NaOH, NaCl आपका वाटर के साथ जब मिलता है तो आपको ऑन द पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ कोर्स आपको NaOH मिलता है, दैट इज योर सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड योर Cl2 एंड योर H2। इन तीनों के अपने अपने यूजेस हैं जो आपकी स्क्रीन पे है, जो हमने कल पढ़ लिया है ना। मूविंग ऑन टू ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर क्या है कि जो हमने अभी बात किया था क्लोर अल्कली प्रोसेस का, विच वाज योर NaCl रिएक्टिंग विद वाटर टू गिव यू NaOH and Cl2 and hydrogen। तो ये Cl2 from the chlor-alkali process is reacting with your lime water। ठीक है, lime water क्या है? CaOH whole twice। तो इस रिएक्शन से हमें मिल रहा है ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, हाँ, आज हम बात करेंगे उसकी भी, प्लास्टर ऑफ पेरिस की भी बात करेंगे। यस, वी आर गोना टॉक अबाउट POP। So yeah, we are getting bleaching powder by the reaction of lime water with the chlorine from the chlor-alkali process। तो इनडायरेक्टली आपका NaCl ही आपको ब्लीचिंग पाउडर तक पहुंचा रहा है। ठीक है, बिकॉज NaCl ने जब NaOH बनाया तो साथ में क्लोरीन रिलीज हुआ था उस प्रोसेस में, एंड दैट क्लोरीन इज यूज्ड टू मेक दिस ब्लीचिंग पाउडर, है ना। Mokshit, okay, we have to go to that daily life also. After this salt, we'll discuss that. ठीक है, pH in daily life, right? We'll discuss that for sure. So yeah, uses में, uses of these bleaching powder you guys have studied and you guys need to memorize these, क्योंकि आपके questions में आपको ये आ जाएगा what is which is bleaching powder के केस में it's gonna be pretty easy, क्योंकि वो वहाँ पे bleach word कहीं ना कहीं यूज हो जाता है in your questions, like how there are questions like when we discuss that what is used for bleaching wood pulp in your paper industries or paper factories, then the bleaching powder is your answer। But please guys, you need to know of the uses। आपके uses से back question बन सकता है in your NTSEs। ठीक है, and it is used for making your drinking water germ free and as an oxidizing agent। oxidizing agent खुद क्या होता है? reduce होता है, oxidize होता है? पूछ रही हूँ बस, वैसे I know you guys know, but let's check whether you know। Okay, Shelly, you have got that. What is happening over here? The oxidizing agent is, just for your knowledge, it itself gets reduced. Okay? So this is what is happening over here. This was in regard with the previous chapter. Was just brushing up. Yes, Ananya, absolutely. Anji. So yeah, then we are moving on to baking soda, which is an amazing concept, which is an amazing thing, an amazing product for your kitchens। ask your mama, है ना। तो it accelerates cooking, it makes your crispy pakoras, it is used for making baking powder। and आदिल बच्चे, आज हम इनकी की बात करेंगे after the class। yeah, it is used as an antacid, it is used in soda acid fire extinguishers, and this is the reaction that how are we getting
NaHCO3, which is your baking soda. Baking soda from NaCl. So when NaCl and H2, यहाँ तक रिएक्शन था क्लोर अल्कली प्रोसेस का, यहाँ से हमें NaOH plus Cl2 plus H2 मिल रहा था, ठीक है। उसके बाद Cl2, अब हमें विल फॉर्म चेन, जितना भी हमने पढ़ा है ऐसे चेन बना लेते हैं ताकि हमें साथ साथ याद होता रहे। नहीं गौरव जी, अभी बस नहीं, हमें चैप्टर फिनिश करना है। NaCl plus H2O were giving you what? They were giving you NaOH plus Cl2 plus H2. अब ये Cl2 was reacting with CaOH2, was giving you what? CaOCl2, which was a bleaching powder. And then this NaCl and H2O were combining with CO2 and NH3. अब आप ऐसे टेबल बना के याद करेंगे तो बहुत ज्यादा आसान होगा, आपको सारे सॉल्ट्स याद होते जाएंगे, ठीक है। Now this is giving you ammonium chloride and your baking soda, which is your NaHCO3. Perfect? Absolutely, it's a mild corrosive base. समझ आया? बेकिंग सोडा बन गया हमारा। आगे चले, वॉशिंग सोडा। अब बेकिंग सोडा क्या था? NaHCO3। अब उससे ही रिलेशन में है आपका। अब जब आप बेकिंग सोडा को रिक्रिस्टलाइज कर देते हैं, यू गेट वॉशिंग सोडा, which is your Na2CO3.10H2O. Now this 10H2O is pretty important because ये 10H2O क्या है बताइए। यस हर्षदा, एब्सोल्युटली, हमने बताया था। .10H2O, what is this .10H2O? Yes, I know Ridhima, it's water, but what is so specific about this water कि हमने इसे .10H2O लिखा है? Why have we done this? Yes, water of crystallization, absolutely. Ananya and Pratmesh, you have got this correct. तो ये water of crystallization है। अब water of crystallization क्या है? What is this water of crystallization? What are we doing? जो हमने बहुत ही हमने बहुत ही फर्स्ट चैप्टर में भी और हमने सेकंड चैप्टर में भी कॉपर सल्फेट हमने बहुत बात की है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशंस की, है ना। 9th क्लास के चैप्टर्स में हमने कॉपर सल्फेट ब्लू कलर्ड सॉल्यूशन, वी हैव टॉक्ड अ लॉट अबाउट इट। नाउ व्हाट इज हैपनिंग, अब वो जो कुछ कुछ सॉल्ट्स होते हैं जो दे अपीयर ड्राई टू अस बट दे आर नॉट एक्चुअली ड्राई, एंड ये हमें कैसे पता चलता है? जब हम उन सॉल्ट्स को हीट अप करते हैं, ठीक है, तो उन सॉल्ट्स को हीट करने पे हमें पता चलता है देयर इज लॉस ऑफ सम वाटर एज वेल, ठीक है। तो इसका मतलब उसके अंदर वाटर था, राइट। तो अब जो वो कॉपर सल्फेट जो वो ब्लू कलर दे रहा था, दैट वाज एक्चुअली बिकॉज CuSO4.5H2O, इट हैड 5 molecules of water as the water of crystallization. So while the forming crystals, every formula unit of those crystals had 5 molecules of water attached, और ये water होता है water of crystallization, है ना। अब जब आप इस केस में कॉपर सल्फेट को हीट करते हैं तो ये ब्लू कलर था, हमने बहुत बार बात किया है इसके बारे में, तो ये इसका .5H2O को 5H2 सेपरेट आउट हो जाता है और हमारे पास रहता है सिर्फ CuSO4, which is actually white in color. If you add water again, it will turn to blue again, और वो फिर से हाइड्रेट हो जाएगा, ठीक है। Right. Yes, absolutely. Very good with the explanations. Everybody, Pratmesh, Ananya, amazing tech. And anybody, Mokshit? Yep. So this is what is happening over here. अब ऐसे ही we have some other salt also, which is your CaSO4, calcium sulfate. Yeah, this is also known as your blue vitriol, right? This is your blue vitriol. Then there is your green vitriol also. Then there is your red vitriol also. So green vitriol is your FeSO4.7H2O. And red vitriol is your cobalt sulfate.7H2O. Okay? So this is for your basic knowledge. So this is what's with the vitriols also. So this is the vitriol family, है ना। अब CaSO4 भी एक ऐसा ही salt है which has some amount of water molecules, ठीक है। तो ये water molecules, अब हमारा ये है gypsum. So this is your gypsum, and upon heating gypsum, it is giving you CaSO4.2H2O. If you heat it, delta is the sign for heat, you are getting CaSO4.half H2O, ठीक है।
तो ये है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ठीक है, हेमीहाइड्रेट। तो ये हेमीहाइड्रेट जो है, इस कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट इज व्हाट, योर पीओपी। तो आपके फ्रैक्चर्स में यूज होता है, यस, हाफ वाटर। अब ये प्रैक्टिकली कैसे पॉसिबल है हाफ वाटर? तो नहीं, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। बेसिकली आपका दो मॉलिक्यूल्स हैं सॉल्ट के, दैट इज योर कैल्शियम सल्फेट एंड योर वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, ठीक है। तो हम बस उसे कैल्शियम सल्फेट को वन मॉलिक्यूल करने के लिए वी आर राइटिंग हाफ वाटर, बट इट इज एक्चुअली व्हाट, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्ट विद वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। परफेक्ट, राइट। एंड गौरव झा, विट्रियोल का कोई स्पेसिफिक मतलब नहीं है, ये आपके दिस इज विट्रियोल फैमिली, ये आपको दिस इज नॉट रिलेटेड विद दिस चैप्टर, बट दिस इज समवेयर आस्क्ड कि ब्लू विट्रियोल का क्या फॉर्मूला रहता है। सो दिस इज योर CuSO4.5H2O। हाय दीपक, हाय अमोक, ओके, एंड हाय सक्षम, आई वेलकम एवरीबॉडी नाउ। सो या, तो ये आपका हेमीहाइड्रेट है, आपका पीओपी है, एंड दिस पीओपी इज यूज्ड फॉर स्मूथनिंग द सर्फेसेस, जो आपकी वॉल्स होती हैं, देन दे आर यूज्ड टू मेक टॉयज एंड दे आर यूज्ड टू गिव शेप चीजें। ओके, हाय अगेन प्रिंसी। एंड देन दे आर आल्सो यूज्ड सबसे ज्यादा टू सपोर्ट फ्रैक्चर्ड बोन्स, तो वो फ्रैक्चर्स में यूज होता है। परफेक्ट, दिस वॉज सपोज टू बी माई होमवर्क। तो ये मैं अपना होमवर्क आज करके आई हूँ, जो मैंने आप लोगों से कल प्रॉमिस किया था। आई हैव मेड अ टेबल ऑफ द कॉमन नेम्स, द केमिकल नेम्स एंड द केमिकल फॉर्मूलाज। तो आपको ये प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट और व्हाटएवर, प्लीज क्लिक अ पिक्चर ऑफ दिस। तो ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है टू मेक अ रिलेशन। तो आपको एक ही जगह पे सारी चीजें इसमें लिखी हुई हैं, ठीक है। यस हर्षिता, एब्सोल्युटली, वो पाउडर जो है वो एब्जॉर्ब कर लेता है वाटर, राइट। यस अनन्या, एब्सोल्युटली, this equation is right. So this was supposed to be my homework and I have come with my homework as well. So please, ये है आपके जो आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए. So we start off with common salt. Common salt, I don't want. हाँ जी. तो ये है आपका कॉमन सॉल्ट. कॉमन सॉल्ट इज योर सोडियम क्लोराइड, NaCl इज द फॉर्मूला. देन कम्स योर ब्राइन. की ब्राइन क्या होता है? Brine is your aqueous sodium hydroxide. That is why I've specified the state over here, because यहाँ पे state बहुत जरूरी है. Aqueous form of NaOH is your brine. ठीक है? Yeah, cool. And thank you Gaurav. Yes, well done. Yes. फिर bleaching powder is your calcium hypochlorite. अब यहाँ पे D नहीं आएगा, T आएगा. Please be very careful. हाँ जी. Okay, Saksham, if it's wrong, please tell me. If you are decahydrate आएगा इसके आगे. Am I right? If you want to include the water of crystallization in the naming process, yes, Pratmesh, gypsum and POP are interconvertible by the use of water, because yes, Ridhima, I am. Thank you for acknowledging it. Hi, Anika. Yes, Saksham, absolutely. हाँ, तो ये क्या होगा यहाँ पे, अगर आप हाइड्रेशंस को भी, अपने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को भी अपने नाम में इन्वॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पे डेकाहाइड्रेट आएगा, ठीक है. अदरवाइज सोडियम कार्बोनेट वुड डू. ठीक है. इफ you write that washing soda का chemical name is sodium carbonate, you're gonna get marks for sure. Yeah, for 10H2O it will be decahydrate. And plaster of Paris, POP is your calcium sulfate, hemihydrate, that is your half H2O. Perfect. So I have come up with my homework and I hope you guys this is helpful. Also आपको इसके साथ what you need to know is your lime water, जो कि मैं बता चुकी हूँ. It is your calcium hydroxide, है ना, CaOH whole twice. Then comes your limestone, या फिर आपका लाइमस्टोन होता है या मार्बल होता है, वो एक ही होता है. इट इज योर कैल्शियम कार्बोनेट. Yes, Ananya, I think I will. It's okay. So calcium carbonate is your CaCO3 whole twice. Oh, sorry. CaCO3 only. I'm sorry, my bad. Oops.
यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट विल बी आवर CaCO3. ठीक है, यस इवन चॉक या. तो आप लोगों के सामने ये टेबल है, प्लीज मेक द मोस्ट ऑफ इट. आप इस चीज को प्लीज बी केयरफुली यूजिंग इट, और आप किसी भी वर्ड में, किसी भी कॉमन नेम, केमिकल नेम, फॉर्मूला में कंफ्यूज नहीं होइएगा. ठीक है, सेव दिस पिक्चर एंड मेक द मोस्ट ऑफ इट. राइट, चलिए, आई होप द चैप्टर इज प्रिटी क्लियर. हमारा ये चैप्टर खत्म हो गया है एंड मोक्षित का क्वेश्चन आ गया है, विच वाज, यही टाइम है उस क्वेश्चन को डिस्कस करने का. सो या, हियर इट इज. अप नेक्स्ट इज दिस. तो हमारा ये है बात दैट 27 को वी आर गोइंग टू हैव एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स का क्वेश्चनर. क्वेश्चनर, अब यहाँ पे मैंने मेंटी क्यों नहीं रखा है, आई हैव माई एक्सप्लेनेशन. कि यहाँ पे मेंटी इसलिए नहीं है बिकॉज मेंटी में इट्स जस्ट माई क्वेश्चन एंड यू आंसरिंग. ठीक है, आई वॉन्टेड टू डिस्कस दिस चैप्टर अ बिट मोर, क्योंकि ये अभी एनसीईआरटी के बेसिस पे हुआ है. अभी कुछ कुछ नए कॉन्सेप्ट्स और आने हैं, जैसे कि मोक्षित का आरएनएस एसिड, and there are a lot of things जिसके बारे में हम बात करेंगे. एंड दीपक, यू आर फ्री टू लीव द क्लास राइट नाउ. ठीक है, सो या, तो एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स का क्वेश्चनर क्योंकि हमारा क्वेश्चनर इज नॉट जस्ट अबाउट मी आस्किंग क्वेश्चंस एंड यू गाइस आंसरिंग, इट इज ऑलवेज अबाउट डिस्कशन. तो कल हमारा डिस्कशन है जिसमें हम सारी चीजें डिस्कस करेंगे बहुत ही अच्छे से. Oh, thank you so much, Pratmesh. That's really an honor, and I hope to see the new guys जो भी आज नए आए हैं वो कल भी आए. कल हम इसी टाइम मिलते हैं 8 बजे, और हम डिस्कस करेंगे, कल क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे. उसके बाद ट्यूसडे को आपका मेंटी है, for sure there is menti coming up of chapter 1 and 2. It's not just acids, bases and salts. It is also first chapter is also coming up. ठीक है, तो आपका दोनों चैप्टर्स का कंबाइंड मेंटी है. परफेक्ट. ठीक है, सो मेंटी का प्रॉमिस अब मेरा पूरा हो गया. 29 को मैं मेंटी क्विज करेंगे हम. ठीक है, नहीं मंडे को क्लास होगा, बट उसका अपडेट आपको मैं कल दूंगी कि किस चीज की क्लास है. ठीक है, परफेक्ट. सो थैंक यू सो मच गाइस. या, seems like Ananya, yes, you guys are excited for this. Monday there will be a class, there will be a class, don't worry. I will inform that tomorrow कि किसकी होगी. ठीक है, ओके. जयप्रकाश, आपकी मैथ्स की क्लास है. That's pretty sad. I wish I could do something. I'll see if there is something which can be done. ठीक है? Yes, yes, Harshita. Yes, you guys, all of you guys, be regular, be good, and be with me always. So yeah, हम रोज मिलते रहे, रोज डिस्कस करेंगे अच्छे अच्छे टॉपिक्स, अमेजिंग अमेजिंग चीजें. जैसे मैं बोलती हूँ, हमें कोई भी कॉन्सेप्ट, वी डू नॉट हैव टू लीव एनी कॉन्सेप्ट अनटच्ड. राइट, बिफोर गोइंग मेंटी टाइमिंग. हर्षदा कम ऑन यार, अभी मेंटी का दे दिया है, टाइमिंग भी दे दूंगी प्लीज. या रिद्धिमा, इट्स ऑल माय प्लेजर यार. यस अयान, मेंटी आपके सामने है कि ट्यूसडे को होगा. यस 38 लाइक्स, थैंक यू. अभी और भी अपने फ्रेंड्स को बोलो कि आए. और हाँ अयान, मेंटी होगा ना, होगा, पक्का होगा. मैं टाइम भी बता दूंगी. ठीक है, मंडे को मैं टाइम कंफर्म कर दूंगी. फाइन. सो शैल आई लीव? मैम, विल यू कम टुमारो फॉर फॉरवर्डिंग दिस चैप्टर? कल हम मिल रहे हैं 8 बजे for discussing this questionnaire, right? For acids, bases and salts, 8 p.m. we are going to meet you. Thank you, Princey. I love you guys too. Thank you. Chaliye, I'll see you tomorrow with the questions. And before going, do not forget to like, share with your friends, bring all your friends tomorrow and every day. ठीक है? Mokshit, it won't be postponed. कल के टेस्ट का टाइम, हर्षिता, we will meet at, it's not a test actually, it's a discussion question at 8 p.m. Thank you, Tushar. Thank you so much. Bye-bye. See you. लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. एंड सब्सक्राइब करने से आपको कल की बात पता चल जाएगी कि कल हम क्या डिस्कस करेंगे. रिद्धिमा, आपको अपडेट मिल जाएगा कि नेक्स्ट चैप्टर कौन सा होगा. Those of you at Unacademy or wishing to subscribe to Unacademy, which I really really hope you guys do, use my name as the referral code and get amazing discounts. Yes, Gaurav, thank you Mokshit, Ananya, everybody, Princey, Riddhima, Harshita.
Thank you, thank you. Yes, we will meet tomorrow with High Josh again. And we always have to ignore the haters. We don't have to waste time on them. हमें सिर्फ chemistry पढ़नी है, अच्छे से पढ़नी है. And we will crack all the exams, right? Bye bye. See you tomorrow. Bye, guys. Thank you so much for being such fun.